the other side, ladies and gentlemen, the very essence of Ram as chronicled in the Ramcharitmanas has been set ablaze, hurting the astha of Hindus. This act of what many devout call sacrilege by the OBC Mahasabha has been linked to the Samajwadi Party. This act was after Akhilesh's Neta, some SP Maurya, called the Granth anti-Dalit and discriminatory. 10 people have been booked for promoting enmity and disrupting law and order, including Maurya. Instead of cracking the whip, he was not only feted but also backed and promoted by his party's boss Akhilesh Yadav. He has now been elevated to the post of a National General Secretary of the Samajwadi Party. Remember, SP Maurya also faces a bounty of rupees 21 lakhs announced by the Mahant of Hanuman Gadi. Times now confronted the SP's General Secretary and watch how he remains brazenly defiant. सरकार के दबाव में एफआईआर कितनी भी हो जाए, अगर हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात चलती रहेगी. एक नहीं 1000 एफआईआर हो जाए तो भी सच कहने से पीछे नहीं रहेंगे. उसमें अरेस्टिंग हो गई पुलिस ने अभी 2 मिनट पहले ही मैसेज दिया है कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो इसमें 5 आरोपी मुझे भी गिरफ्तार कर ले. जब मौके में मैं था ही नहीं तो मेरा नाम कैसे आ गया? मैं तो उल्टा पुलिस पर एफआईआर करा दूंगा. जब जिस घटना से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, जिस घटने में मौके में मेरी परछाई तक नहीं गई, उस एफआईआर में मेरा नाम कैसे आ गया? अब स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की विरोधी है. इसलिए महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने वालों के साथ भाजपा खड़ी है. तो आप इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे? इसमें भी कोई शक. अभियान चलता रहेगा. और कार्रवाई होगी तो? सच की बात करना अपराध नहीं. किसी पुस्तक का विवादित अंश निकालने की मांग करना अपराध नहीं. महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करना अपराध नहीं. You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Well, he's continuing to be defiant, no action on him. Instead, he's been promoted, and that's the debate we bring to you, ladies and gentlemen. And joining me on the debate, Sanjay Chaudhary, spokesperson of UP BJP, Rahul Easwar, activist, joining me. Lokesh Jindal, leader of the Congress, continues to be with us. But my first question goes to Mr. Vivek Silas, spokesperson of the Samajwadi Party. Vivek Silas ji, ab tak to what we saw was Akhilesh Yadav used to accuse the BJP of polarization. What is this formula? And what is this absolute Hindu phobia that the Samajwadi Party is now suffering from? You don't believe in the Ramcharitmanas, it's your call. But how can you hurt the feelings of a majority of this country that believes in Ram and believes in the Ramcharitmanas? I want to ask you, what action will be taken on Swami Prasad Maurya? Yes, very good evening to you, Navika ji, and panelists and the viewers. Actually, as far as the Samajwadi Party is concerned, what I feel that we all believe in the Sanatan Dharma. It's not that we don't respect it or we don't follow it. But there are some, the few lines that are written in that, like Dhol Gawar Shudra Pashunari Sakal Taran Ke Adhikari. That's where the objection lies, actually. But as far as the Bharatiya Janata Party is concerned, you said just about Swami Prasad Maurya. So let me remind the viewers and to you, Navika ji. So you'll start setting religious books on fire, sir? No. So you'll start setting religious books on fire, sir? Is that, if you have objection to a few lines that you say, you've realized them in 2023 and you will set fire to the religious scriptures? No. Not at all. No, we condemn that, ma'am. It's not at all. It was not the Samajwadi Party that did it. Actually, it was the Akhil Bharati. When have you condemned that? When have you condemned that? When has Mr. Akhilesh Yadav condemned that? Have you heard Mr. Akhilesh Yadav condemn that, Rahul Easwar? He has been made, Swami Prasad Maurya has been made a National General Secretary.
Rahul Easwar, did you see Navika ji, Akhilesh Yadav Navika ji, I'm a condemning proud this? practicing Hindu, but whenever I take Prophet Muhammad's name, I make it a point to add Sallallahu Alaihi Wasallam. We are a nation, civilization which respects every religion, and Mahatma Gandhi and Vivekananda taught that. With utmost respect, can I ask a question? If the same had happened to Holy Hadith, if the same had happened to any book on Holy Bible or any other religion, what would have been the reaction? New York Times would have written an article, there would have been international outrage, we would have said India is going down the drain, fascism is taking over. But when something is connected to Ram, it is okay, chalta hai. Ramcharitmanas hai, so some intellectual criticism is there. See, this is the double standard, pseudo-secular hypocrisy of our so-called liberal and progressive friends. Had it happened to Muslims, Christians or any other religion, they would have been the first people to come out and defend. But when it happens to Hindus, it's okay, chalta hai attitude. They have taken Hindus as a punching bag. They have taken Hindus as a soft target. They have an attitude of anything is chalta hai with Hindu. This is beyond politics. Ramcharitmanas is one of the most celebrated books of India. If you have an intellectual criticism, please do write a paper. Please do write a book on it. Please have an academic discussion. Dissect each and every line. संजय चौधरी जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि विवेक साइलेंस जी का कहना है कि अखिलेश यादव जी ने खेद प्रकट किया और इसको कंडेम किया है। आपने कहीं सुना कि अखिलेश यादव जी ने कोई एक्शन लिया हो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर? नहीं, अखिलेश जी ने इसका कहीं कोई विरोध नहीं किया है, कंडम नहीं किया है। और ये समाजवादी पार्टी की लगातार हार के बाद उस समाजवादी पार्टी की जिसकी विचारधारा लोहिया के ऊपर आधारित है, और लोहिया 1961 में ही इस उत्तर प्रदेश के अंदर रामायण मेले की शुरुआत करते हैं। और लोहिया कहते हैं कि रामायण का पाठ होना चाहिए और रामायण का जो राम का जो चरित्र है वो इस देश को जोड़ने का सबसे बड़ा तरीका है और रामचरितमानस का पाठ कराया जाना चाहिए। उसी 1961 में लोहिया की बात को उत्तर प्रदेश में कमलापत त्रिपाठी जब मुख्यमंत्री रहते हैं 1973 में, तो वो रामायण मेले का आयोजन चित्रकूट में कराते हैं। और 1981 में श्रीपद मिश्रा कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रामायण के मेले की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो जो रामायण जो उत्तर प्रदेश के जन जन में व्याप्त है, लोहिया उसे स्वीकार करते हैं। और आज की लोहिया की विचार पर चलने वाली समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक आदर्श की हत्या करके देश में ऐसे जातीय उन्माद को और ऐसे लोगों का सहारा लेकर विद्वेष उत्पन्न करती है। निश्चित रूप से आज लोहिया की आत्मा स्वर्ग में, निश्चित रूप से ऐसी राजनीतिक दल जो उनके आदर्श पर चलता है निराश हो रही है। साइलेंस जी, मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, विवेक साइलेंस जी, मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ कि आज के दिन कम से कम गांधी जी तो आपको याद होंगे ना, और उनके आखिरी शब्द भी याद होंगे ना, हे राम। आज मुझे बताइए कि रामचरितमानस का ऐसा व्यवहार, और आप कह रहे हैं कि आप इस देश में सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और बीजेपी है वो ध्रुवीकरण कर रही है, पोलराइजेशन करती है। मैं आपसे पूछती हूं, क्या एक्शन लिया जाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य पर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कंडेम किया है, विरोध हमें कहीं सुनाई नहीं दिया, पर अगर अखिलेश यादव जी ने कंडेम भी किया है तो कोई एक्शन होगा कि नहीं? क्योंकि ये रामचरितमानस इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। इसको जलाना, इसके बारे में कुछ अपशब्द जो कहे थे वो तो बात छोड़ दीजिए, ये तो जला दी गई है। इस पर मैं पूछना चाहती हूं, क्या एक्शन होगा? मैम देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया तो मैं बता दूं आपको कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रभु रामचंद्र को इलेजिटिमेट कहा, उनकी मां को गाली दी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, डॉक्टर संजय निषाद, आपको याद होगा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव जीतने के लिए बजरंग बली को दलित तक बता दिया, और उप मुख्यमंत्री शर्मा जी ने यहां लखनऊ में सीता मां को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया। लेकिन बड़ी अचरज होता है और अजीब लगता है कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलना चाहती है, आप मर्ज करेंगे बीजेपी के साथ? नाविका जी,
रामचरितमानस का सम्मान करते हुए कह रहा हूं, जो प्रतियां आप बोल रही हैं जलाई, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो अखिल भारतीय पिछड़ा समाज का एक संगठन था, उसने किया। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की उसमें साजिश हो, 4 लोगों को खड़ा करके रामचरितमानस को जलवा दिया और बोलने लगे कि समाजवादी पार्टी ने जलाया है। मैम, इसमें इसका कोई प्रमाण अगर आपके पास हो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। संजय चौधरी जी, कोई प्रमाण हो, कोई भी प्रमाण आपके पास हो कि इसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है, आप मुझे बता दें। बॉल भाजपा के कोर्ट में डाल दी गई है। देखिए, समाजवादी बॉल आपके कोर्ट में है। संजय निषाद को कब समाजवादी साहब ये पार्टी के मित्र, मुझे लगता है कि जब ये जलाई जा रही थी तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तस्वीर लगाए हुए थे, और जो जलाने वाले थे, दुर्भाग्य की बात है कि इसके पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र है कि जलाए जाने वालों में जो सबसे बड़ा नाम है वो मिस्टर सलीम का है। सलीम ने लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेरणा से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेरणा से प्रेरित होकर सलीम इस प्रकार की आग को जला रहे हैं और समाजवादी पार्टी के Lokesh Jindal ji, I want to ask you, is the Congress today with the Samajwadi Party? We are against politicization of religion in any form. The very tendency of BJP, Samajwadi Party to drag Hindu religion into politics to get some political brownies is playing with emotions of the people, because Ramcharitmanas for many is a way to salvation. So such forms of tendencies must be desisted, it must be condemned. Rahul beyond Easwar, political parties, have beyond political you lines. heard Mr. Rahul With Gandhi? due respect. Have you heard Mr. Rahul Gandhi or any senior Congress leader condemning this action in Uttar Pradesh? Navika ji, I absolutely know of a person who would have condemned. I absolutely know of a person who would have condemned. As you rightly invoked, had Mahatma Gandhi been alive, he would have definitely said this is wrong. No, we should respect every faith. Had it been Hindu, Muslim or Christian, we should respect every faith. Let me complete, and the sad Navika. aspect is, see, these kind of motherhood statements or broad statements are not enough. Will Lokesh ji, who I really respect, will Lokesh ji react in the same way had the place been that of a holy hadith? Or I'm not even saying Holy Quran, Holy Hadith, or any, something like anything related to Christ. So the issue is, they treat minorities as a vote bank and Hindus as a punching bag. Allow me to reply, Navika ji. When I'm here, one minute. I'm completely out of time. The only issue here is lectures on stopping hate in India. While we welcome them, there is no space for hate in civilized society. Absolutely none. But lectures on stopping hate against other religions and actually hurting only the Hindus, using them as a punching bag. Is that fair? That's the question we are asking tonight. No religion must be looked at with some sort of condescending attitude, which is absolutely ensured in our constitution, equality to every religion. But then, why is Hindu phobia taken as just another thing? Anybody can do it because Hindus are a majority in this country. But nobody should do anything against any other religion. Is that the right attitude to have? Why not give the same respect to every single religion as ordained in the Constitution of India? That's the question Mr. Akhilesh Yadav and the Samajwadi Party need to answer tonight. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on the News Hour. Good night, be safe.